Good morning students, hope you all are fine and doing well. Till now we have discussed about cell membrane, cell wall, then we discussed about cytoplasm, we started endomembrane system. Now we will study our next cell organelle, that is mitochondrias. Mitos means thread and chondria means granules. Now let's talk about the discovery of mitochondria. Actually, mitochondria for the first time was discovered by Colliker. Discovered by Colliker as granules. They called mitochondria as granules or sarcosomes in muscle cell. Then later on Altman studied them and gave them a different name. So the mitochondria was firstly observed by Colliker and Altman established them as cell organelles, and he coined the term bioblast for mitochondria. And the credit for discovery of mitochondria goes to Fleming and Altman. The mitochondria was first discovered in 1900 by German pathologist and histologist Altman. In studying animal cells, he studied small granules in the protoplasm of cell, which is called bioblast. Today they are known as mitochondria. As I have already told you कि Colliker ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था mitochondria को in 1880. Colliker, and later on Altman established it as cell organelles and named it as bioblast. Later on the term mitochondria was given by C. Benda. So mitochondria is a double membrane bound organelle which is found in cytoplasm of eukaryotic cell. As I have already told you, mito means thread and chondrion means granule like. They were firstly established as cell organelle by Altman, and he coined them as bioblast. Later on the term mitochondria was coined by Carl Benda, C. Benda, in 1898. Now, where mitochondria are located? Mitochondria are found in eukaryotic cells but not in prokaryotic cells. They can specifically be found in plants and animal cells, and the mitochondria are located in the cytoplasm of eukaryotic cell. तो कहाँ present होते हैं mitochondria? Cytoplasm में present होते हैं eukaryotic cell के, and prokaryotic cell में mitochondria absent होते हैं. ये हमने prokaryotic cell की जब study की थी वहाँ study किया था कि mitochondria जो हैं वहाँ पे absent है. वहाँ पे cell extension से mesosomes फॉर्म होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करते हैं. और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका बेसिक फंक्शन आप सबको पता ही है कि क्या होता है. इट्स बेसिक फंक्शन इट्स द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट्स द अप्रॉक्सीमेट साइज एंड शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria are single rod shaped cells. They range from 0.5 to 10 micrometer in. तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम शेप की बात करें, they are basically saucers or cylindrical shape, and their numbers may vary from cell to cell. Usually plant cells have fewer mitochondria as compared to the animal cell. In plants, fewer mitochondria is present as compared to animal cells. In higher animal, maximum mitochondria are found in flight muscles of birds, and the number of mitochondria basically depends upon the physiological activity of the cell. Physiological activity of cell. Now let's talk about the structure of mitochondria. It's double-walled outer and inner membrane enclosed compartment. Mitochondria is double membrane bound cell organelle. It has two membranes, that's outer membrane and inner membrane. These two membranes are formed of proteins and phospholipids. Their chemical composition is actually exactly same that of plasma membrane.
At certain points outer membrane is connected to ear. Certain points पे जो outer membrane है वो connected होती है ear से. The outer membrane encloses the outer chamber. जो outer membrane है वो enclose करेगी outer chamber को, and the inner membrane encloses inner chamber. और जो outer membrane होती है वो smooth होती है and continuous. Outer membrane is smooth and porous. Continuous limiting boundary of mitochondria, यानी उसमें कोई भी बीच में interruptions नहीं है, कंटिन्यूस है मेम्ब्रेन. वेयरएज जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है, यानी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इनफोल्डिंग्स होती हैं और वो इनफोल्डिंग्स को हम बोलते हैं क्रिस्टी. यानी ऐसे इसकी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, जैसे कि आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ऐसे इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है. ये जो अंदर इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स है इनको हम बोलते हैं क्रिस्टी. एक्चुअली दीज फोल्ड प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया टू जनरेट एटीपी. Outer chamber has fluid of low viscosity and inner chamber contains dense proteinaceous material called mitochondrial matrix. यानी कि जो इसके स्ट्रक्चर है उसको हम 4 हेडलाइंस में पढ़ते हैं. Outer membrane which is smooth and porous and its continuous limiting boundary of mitochondria. Inner membrane it's deeply folded with and these fold provide greater surface area to generate ATP. Cristae inner membrane is compartmentalized into various cristae, okay, and matrix it's the ground substance or space which is enclosed by inner membrane. Now you can see in this picture that it's the outer membrane. It's red outline which you can see here. This is outer membrane, and these infoldings inside the outer membrane is inner membrane. This infoldings, this is in this form. These infoldings is inner membrane, and this infoldings is termed as cristae. And the space between outer membrane and inner membrane is termed as intermembrane space. And the ground substance or the ground space which is enclosed inside the inner membrane is termed as matrix. It contains granules, ribosomes, it has its own DNA, it has ATP synthetase particles. Summing up again, a mitochondria contains outer and inner membrane which is composed of phospholipid, bilayers and protein. The two membranes have different properties. Because of this double membrane organization, there are 5 distinct parts of mitochondria. They are outer mitochondrial membrane, the intermembrane space, यानी the space between outer and inner membrane. Outer mitochondrial membrane है, फिर उसके बाद inner mitochondrial membrane है, और जो outer and inner mitochondrial membrane है इनके बीच में एक space present है जिसे हम बोलते हैं intermembrane space, या इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोला जाता है. क्रिस्टी प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज टर्म्ड एज क्रिस्टी. मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ऑफ क्रिस्टी हायर. जो मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें क्रिस्टी का नंबर भी ज़्यादा होगा. These are found by infoldings of the inner membrane and matrix. The space within the inner membrane. Inner membrane के अंदर जो space filled है जिस ground substance से, that is termed as matrix. So this is all about the structure of mitochondria. There are various other names of mitochondria. As you know that in it a single double-stranded circular necked DNA is present in mitochondrial matrix, as I have told you. Ribosomes are also present, and the mitochondrial DNA can code for the synthesis of some types of proteins. बहुत तरह के proteins का भी ये क्या करता है, synthesis कर सकता है. Proteins इसमें present हैं, enzymes भी synthesize होते हैं. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी बोलते हैं. इसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, इसमें इसका अपना सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. The main function of mitochondria is to produce energy in the form of ATP or adenosine triphosphate. Cells use this to perform specific function necessary for cell survival and function. देखो हर एक सेल को एक एनर्जी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एंड विदाउट दैट एनर्जी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं या जो उनके फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते ऑर्गेनल्स.
तो एटीपी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एटीपी है यानी जो हमारी एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी जो है सेल की वो किस फॉर्म में है, एटीपी की फॉर्म में। तो ये जो फॉर्मेशन होता है एनर्जी का ये कहाँ पे हो रहा है, या जो प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का वो क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो स्पेसिफिक फंक्शन यही है माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि दैट व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। एक्चुअली the main function of mitochondria is the production of ATP. That's why it's termed as powerhouse of cell. They also help to carry out cellular respiration in the eukaryotic cells. जो eukaryotic cells के अंदर जो cellular respiration हो रहा है वो भी कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और देखो respiration होता क्या है, ये respiration it's a process by which energy is produced in the form of ATP molecule, and without energy a cell cannot perform its activities. तो जो मेन साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। So here is the explanation that why mitochondria is called powerhouse of cell, because it produces the energy required for cellular function. ये energy produce करता है जो required होती है cellular functions के लिए, and the energy is produced during the oxidation of digested food particles. जो food particles है उनका digestion होता है, उनका breakdown होगा जिसकी वजह से क्या होगा, energy का production होगा, like proteins, carbohydrate, lipids by the oxidative enzymes. Oxidative enzymes की हेल्प से क्रिस्टी के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे डाइजेशन होगा। एंड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस वाटर एंड CO2 आर प्रोड्यूस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। वाटर एंड CO2 प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, और जो रिलीज एनर्जी है वो स्टोर होगी, और जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है, ATP की फॉर्म में। तो ATP क्या है, हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है। हैंस मेन फंक्शन क्या हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के, या सिग्निफिकेंस क्या हो गया, इट्स पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, इट कैन सिंथेसाइज their own proteins as ribosomes are present. They have their own ribosome, they have their own DNA, they are also termed as semi-autonomous organs of the cell. They are also termed as most busy and active organelle in a cell. Thanks for watching. Hope you like the content and have a nice day.